Class in human resource management. Till now we studied about the basic concept and the meaning of human resource management and what are the human resource planning and how we follow the certain steps. Now in the area of human resource planning, again there is a significant concept which is known as job analysis. Job analysis हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को एनालाइज करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है. नाउ टुडे इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द बेसिक टर्मिनोलॉजी. Before discussing the job analysis in more detail, many related terms are used in the personnel and it should be clearly defined. First of all, the task. Task एक ऐसा डिस्टिंक्ट वर्क होता है जो बिगिनिंग और एंड में आइडेंटिफिएबल होता है. एग्जाम्पल इज पोस्टमैन अगर शॉर्ट करता है बैग फुल ऑफ मेल्स इन एप्रोप्रिएट बॉक्सेस, दैट मीन्स दिस इज हिज टास्क. वेल, इफ वी डिफाइन द ड्यूटी हैज सेवरल टास्क विच आर रिलेटेड बाय सम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. सो जब भी किसी भी एंटरप्राइज में रिक्रूटमेंट दिया जाता है, सो बिफोर द एडवर्टीजमेंट द जॉब ड्यूटीज उनको पहले से ही क्लियर कर लिया जाता है. देयर आर सर्टेन बेसिक स्टेप्स विच वी फॉलो इन द जॉब एनालिसिस. फर्स्ट इज कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग जॉब इंफॉर्मेशन, checking the job information for accuracy, writing job description based on information, using the information to determine the skills, abilities and knowledge that are required on the job, updating the information from time to time. The personal tool with which the duties, responsibilities, operations, conditions and organizational aspects of a particular job are studied, specified and clearly enumerated is job analysis. हम job analysis में एक पर्सनल टूल मान सकते हैं जिसमें हम व्यक्ति को क्या ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ऑपरेशंस करना है उसको क्लियरली एनालिसिस करते हैं. वो एक प्रोसीजर है जिसमें जॉब को सिस्टमैटिकली डिस्कवर किया जाता है और नोट किया जाता है. हैंस in short, you can say job analysis is also known as job study. There are two components of analyzing any kind of job. First is job description and another one is called job specification. Job specification. It simply means a written summary of tasks, duties and responsibilities of a job. Job analysis provides information in 7 basic areas, students. First is the job identification, यानी क्या title है, including the code number if any. What are the characteristics of the job, उसकी location, setting, who will be the supervisor, union, what are the legal terms related with that job, what are the hazards and discomforts if any. What the typical workers does, that simply means उनका टाइमिंग, उनकी सिंपलिसिटी क्या होगी, रूटीन क्या होगी, टास्क की कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स, फॉर फंड्स एंड प्रॉपर्टीज़, what materials and equipments the workers use, how the job is performed, क्या वो हैंडलिंग, फीडिंग, रिमूविंग, ड्रिलिंग, ड्राइविंग, सेटिंग अप and many others, what kind of operations they have to perform. That simply means it defines the nature of operations and specify the operations also. What is the required personal attributes? In this, it defines the nature of experience, training, physical strengths, coordination, mental capabilities, physical demands and attitudes. Also, the social skills are some attributes. And you can say the working conditions. If the working place is poor, providing the poor working condition, तो definitely उससे greater आपका negligence होगा, absenteeism बढ़ेगा, indiscipline create होगा and insubordination among the employees. The second part is called the job description, the minimum skills, education and experience necessary for an individual to perform a job. बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन भी जॉब स्पेसिफिकेशन का ही एक पार्ट होता है जिसमें
वर्कर्स की प्रोफाइल को नेसेसरी फॉर्म में रखा जाता है. Here you can see we have taken the job analysis that is divided into two parts, job description and job specification. While in job description there is job title, what would be the working hours, duties and responsibilities, working conditions, salaries and incentives. On the other hand students, job specification के अंडर qualifications, क्वालिटीज़, एक्सपीरियंस, फैमिली बैकग्राउंड और ट्रेनिंग को लिया जाता है. तो इससे डायरेक्टली वी आर कमिंग टू नो दैट जॉब स्पेसिफिकेशन इज रिलेटेड विद द स्पेशल थिंग्स विच वी नीड फॉर द जॉब, एंड जॉब डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली identifies the components of job and looks for everything that concern with the job. Now, what are the uses of job description and job specification in the area of personnel management, or you can say in the area of human resource management? We have to plan the personnel, we have to do the performance appraisal, hiring the workers, have to provide training and development. In case of job evaluation and compensation, we need to know the nature of job and its specialization. Health and safety, it is related with the working condition and work environment. That is a major contributing factor in the performance of the job and the satisfaction of the workers. Employee discipline, work scheduling, and last is career planning. So you can say the uses of job description and job specification is wider because it is connected with the worker and with the enterprise as a whole. There is again a process of job analysis. जॉब को जब भी एनालाइज किया जाता है स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन 6 बेसिक स्टेप्स. इन बेसिक स्टेप्स को फॉलो अप करके हम किसी भी जॉब एनालिसिस को कंप्लीट कर सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज वेयर वी हैव टू कलेक्ट द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब, selection of representative position to be analyzed. You have to collect the job analysis data, developing a job description, developing of a job specification, and last, developing employee specification. Well, before the recruitment, before the advertisement releases, we have to analyze the job. इस पर पूरा का पूरा एक स्टडी और होमवर्क किया जाता है जब भी आपके वहाँ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वैकेंसीज होती हैं. Here this chart shows the process of job analysis, where I say first step is to identify the job analyze. That means which kind of job you need, what profile, qualifications, you age, etc. you are asking for. Then develop the target audience description. Then it compile the total task inventory. कितना उनका टास्क होगा, उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर किया जाता है. वी हैव टू कलेक्ट द टास्क परफॉर्मेंस डेटा एंड नॉमिनेट क्रिटिकल इंडिविजुअल टास्क. दैट सिंपली मीन्स सर्वे और एक तरह का सुपरवाइजर किया जाता है जॉब के लिए. वी नीड द डेटा, वी नीड फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस. नेक्स्ट इज अपडेट द टास्क लिस्ट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल टास्क analyze findings. Here we have to see, we have to describe the duties, what are the performance of duties, what should be the mental requirements, skill, what should be the responsibilities, what would be the working conditions, etc. Then distribute the approved critical task list, obtain critical individual task list approval, and identify the critical individual list. That simply means again students, you have to nominate the critical individual tasks that simply match with your criteria. Now job analysis information, job identification, significant characteristics of a job, what the typical worker does, job duties, what material and equipments the worker uses, how a job is performed, and what required personal attributes, and finally the job relationships. Jobs is the part where considered to be static, but आपको it makes the process more meaningful and useful for personnel related decision making. For this purpose, you need to analyze the organization. You use the job analysis information.
जो आपका जॉब एनालिसिस सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स, उसका पर्पस ही यही होता है कि डेटा कलेक्ट किया जाए, जॉब को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया जाए, और जो भी आपका जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब टाइटल, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इट शुड मैच एंड इट शुड फुलफिल इट ऑल ड्यूटीज़।